Good morning, students. So before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, we had discussed about cropping season and in that we have learned three type of crops: Kharif, Rabi and Zaid crops. And if we talk about their season also, we have learned their means growing, sowing season, harvesting season. So if we talk about Kharif, then we can say this crop rainy crops also, and if we talk about the Rabi crop, we can say that winter crop. And Zaid, this is the crop those grown in the between, means between the Kharif and Rabi crops. Okay, so if we talk about Kharif, so we know very well, and on that day I told you that when we come in the school after summer break, means the sowing season, if we talk about the Kharif crops, that is June, July na. And in if we talk about the harvesting season, then means when our midterm exam over, means September and October. And then next thing, the Rabi crops we have discussed. If we talk about the Rabi crops, means Rabi crops after first midterm exam ना, means in the starting of winter, और winter की starting कब होती है? अक्टूबर में ना. So October, November. And next, if we talk about their harvesting season, means harvesting period of Rabi crops, means the summer season, means when our new session start, March, April. Okay. And next thing, Zaid, means these crops are grown for a short period of time na, means like when our new session started, then for April and May, means for 2 months we come in the school na. So these crops grown in, means in between these short period, means April and May. Okay, so all these things we are discussed in the last lecture with the help of table na? So today we will discuss the major crops, and in major crops only about grains. In this video we will discuss about grains only. Okay, now next thing, we know very well that in our country food grains and non-food crops are grown, okay, in different part, and it is depend on climate, on soil types, on temperature. Okay, because these crops vary according to climate, temperature and soil fertility, soil types. Okay, so now again in the tabular form, means with the help of table we will discuss the major crops and in that grains. So let's see that table. See beta, today we will discuss, our topic is major crops. These major crops we will discuss in two videos. So now we will discuss only grains. Okay, now in this beta, in this table, firstly you will prepare this frame, means when we prepare any frame, that then it would be easy for us to remember the things. Okay, so सबसे पहले हम एक फ्रेम रेडी करेंगे और हम फिर क्या करते हैं, उन फ्रेम में अपने मैटर को फिल करते जाएंगे जिससे कि हम वो इजीली लर्न हो जाता है. So that is why today we will discuss this topic with the help of this table. So firstly, these above points you will learn: crops, cropping season, temperature, rainfall, area, state and some key points. Okay, in your book some means different crops like wheat, rice, pulses, maize and millets, these are given in detail. So means many more crops are there in our country, means those are grown in our country, but in your book these crops are given. So we will discuss about these. Here what is the motive to discuss these crops, that at least you have to, means you should have to the knowledge of these crops. Okay, so let's start. First is rice crop. If we talk about the crop, so first rice. So बेटा राइस के बारे में अगर ऐसे आ जाता है कि डिफाइन, मीन्स एक्सप्लेन अबाउट द क्रॉप्स ऑफ राइस, मीन्स with the help of these points you can write 6 or 7 points, means if in 5 marks also it will come, then you can explain easily. Okay, so if we talk about rice in the last video also, means when we discuss the cropping season, then also we know very well that rice is a kharif crops na. So we can, means 1 point we can write this, that rice is a kharif crop and it is grown in the month of June and July. Understood? So means
about their cropping season, and it is harvested in the means in the September and October. So like this also we can make point. So first crop, then cropping season. Okay, cropping season हमें लिखना है राइस का. Then means cropping season के according we can divide it in means kharif crop. Then temperature means for rice which type of temperature is required, 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, मीन्स आप मीन्स जब राइस को ग्रो करते हैं और उसके बाद जो मीन्स जो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो मोस्टली जो एवरेज जो होती है रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर होता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. एंड इफ यू टॉक अबाउट रेनफॉल, इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इज वाटर इंटेंसिव मीन्स क्रॉप ना, बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है इसको. सो रेनफॉल इफ यू टॉक अबाउट देन अबव 100 सेंटीमीटर. ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. नाउ बेटा हियर state and area, these are similar because if we talk about the area then we can know easily then in that particular area which state come na. So see, firstly if we talk about the rice area, then in our northern plain, okay, and नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो डेल्टिक रीजन है. डेल्टिक रीजन मीन्स जहाँ पे जो कोस्टल एरियाज होते हैं. इन द 9th क्लास ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि जहाँ पर जो रिवर्स वो डेल्टा बनाती हैं. ओके, वहाँ पर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा मीन्स सॉइल फर्टाइल होती है और वाटर अवेलेबल होता है. तो इन दीज एरियाज दिस राइस क्रॉप ग्रोन. सो अंडरस्टूड. इफ वी टॉक अबाउट द एरिया देन आर नॉर्दर्न प्लेन, ओके, नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न स्टेट एंड डेल्टिक region. In means this region you can see in your book also. In your book one map is given and in that minor region and major region it is given. So in this table I will discuss only the major region. Okay, so major region of rice crop, northern plains, northeastern state and deltic region. So if we talk about the northern plain, so northern plain में आपका कुछ पार्ट जो ईस्टर्न यूपी आता है हमारा, बिहार आता है. ओके, एंड नेक्स्ट मीन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारा उड़ीसा आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है. ठीक है, डेल्टिक रीजन मीन्स हमारा जो तमिलनाडु है वो वाला पार्ट आ जाता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट, सो व्हेन वी नो दिस एरिया देन इजिली वी कैन राइट अबाउट दी स्टेट्स ऑल्सो ना. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट. सो इफ वी टॉक अबाउट द की पॉइंट अबाउट द राइस मीन्स व्हाट इज द मेन पॉइंट, and that is that it is the most important cereal crops in our country, or we can say that it is the means India is the second largest producer of rice in the world. First is China, second is our country. And if we talk about at the level of our country, then our country means in our country this rice, it is the most cereal crop because इट इज मीन्स इन ऑल ओवर द कंट्री इट इज़ फेमस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउदर्न स्टेट राइस को लाइक करते हैं या फिर नॉर्दर्न स्टेट लाइक करते हैं. हमारी सभी मीन्स पूरी कंट्री में राइस को मीन्स एज अ स्टेपल फूड खाया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्रॉप. सो नाउ अबाउट दिस राइस, ऑल पॉइंट्स क्लियर. नाउ बेटा सी, इट इज कंपल्सरी दैट फर्स्टली यू विल लर्न दीज फर्स्ट हेडिंग ओनली. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्रॉप and that is wheat. Okay, in last video we had discussed that wheat as a rabi crop na. So like first if you will write this means wheat, about wheat you can explain with the help of this table. So next thing if we talk about the temperature, so temperature बेटा जब हम means wheat को grow करते हैं then cool growing season means जब राइस को ग्रो किया मीन्स जब व्हीट को ग्रो किया जाता है तो उस टाइम पे मीन्स विंटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. तो मीन्स एट द टाइम ऑफ सोविंग इट रिक्वायर्ड कूल टाइप ऑफ सीजन. ओके, एंड नेक्स्ट व्हेन वी हार्वेस्ट व्हीट, अब व्हीट को हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल में ना, मार्च के एंड में और अप्रैल में किया जाता है. तो तब क्या होता है, ब्राइट सनशाइन. सो इफ वी टॉक अबाउट मीन्स टेम्परेचर देन कूल ग्रोइंग सीजन, व्हेन वी ग्रो मीन्स व्हेन वी शो दिस means wheat crop then it require cool growing season. And next bright sunshine during harvest means when the harvesting time is there then it require bright sunshine. जब जितनी bright sunshine होती है उतना जल्दी वो
राइप होते हैं व्हीट क्रॉप और उतनी जल्दी उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इफ वी टॉक अबाउट द रेनफॉल, सो रेनफॉल व्हीट के लिए चाहिए होता है बट इतना नहीं जितना कि राइस के लिए। ओके, सो रेनफॉल इफ यू टॉक अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट एरिया मीन्स, now here one confusion may be arise in your mind कि only in these areas these crops are grown. No beta, these are the major area. Okay, in the remaining parts also with the help of fertilizer, with the help of HYV seeds or with the help of any other irrigation facilities, these crops can be grown. But major area, if you talk about the major area, then these areas. Okay, so next thing if you talk about the wheat, गंगा सतलुज प्लेन्स, अब जो गंगा सतलुज प्लेन्स है हमारे उन एरियाज में, और नेक्स्ट थिंग है इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ब्लैक सॉइल रीजन इसमें हमारा जो एमपी है वो आ जाएगा। ठीक है, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, इसमें हमारा पंजाब हरियाणा और यूपी आ जाएगा। सो व्हेन वी लर्न अबाउट दिस एरिया देन वी कैन एक्सप्लेन द स्टेट ऑल्सो कि गंगा सतलुज प्लेन, this also we have learned in the 9th class also. So with the help of this we can explain Punjab, Haryana and UP, and black soil region in the Deccan, that MP. So about this it is clear now. Now what is remaining? Yes, key point. So if we talk about the key point about wheat, so it is the second most cereal crops. First is rice and second is wheat. Okay, so next thing, now next crop, that is maize. In last video we have discussed, and we know very well that it is kharif crop na. Now about maize, remember one thing, that in some part it is grown in rabi season also, like Bihar, because with the help of some fertilizer. Okay, so mainly तो we have right, because here we are writing their major points na. So if we talk about mainly, तो mainly maize is a kharif crop, but in some areas like Bihar it is grown in the means rabi season also. Okay, now if we talk about the temperature, so see the temperature 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये बहुत लंबा बैंड हो जाता है ना। अब इसमें तो 25 है, इसमें हमारा पार्टिकुलर कूल है और फिर ब्राइट सनशाइन है, बट यहाँ पर हमारी बैंड लंबी हो जाती है 21 से 27 डिग्री। सो जो मेज है, इसलिए जो हमारे बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ पे इजिली ग्रो किया जा सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल, दैट इज ऑल्सो द बैंड, सी लॉन्ग बैंड इज देयर ना, 60 to 110 सेंटीमीटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट आर कंट्री, सो हमारी कंट्री में इट कैन ग्रो एट द टेम्परेचर ऑफ 40 means at the rainfall 40 सेंटीमीटर ऑल्सो। ओके, सो मीन्स जो ये मेज समझते हो ना, जो भुट्टा होता है जो खाते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं। सो सी, तो ये क्या है कि जो मेज है खरीफ क्रॉप है, बट इन सम एरियाज इट इज ग्रोन इन दी रबी सीजन ऑल्सो with the help of fertilizer, I told you, like Bihar. And second, if we talk about temperature 21 to 27 degree Celsius means long band, and long band in term of rainfall also, so that is why it is grown in the most of the state. Okay, in the grown in the large area. Okay, means now next thing about area. So if we talk about our country, now we are discussing about India only na. So see, old alluvial tracks. Now after this video in the comment section you will tell me old alluvial soil is khadar or bangar. Okay, in the 9th class we have discussed this thing, so you will tell me, it is your work, that what is old alluvial soil, khadar or bangar. So इसके लिए जो मेज है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल एरिया जितने भी हमारे हैं। अब उसमें हमारी कौन कौन सी स्टेट आ जाती है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ओके, सो इन दीज स्टेट्स मीन्स दीज आर दी मेजर स्टेट्स वेयर दिस मेज हैज बीन ग्रोन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द की पॉइंट, सो की पॉइंट बताओ, इट इज फोडर एंड फूड क्रॉप मीन्स मेज से हम मीन्स जो
कॉर्न मीन्स कॉर्न से क्या बनता है, हमारा जो आटा है वो भी बनता है, ठीक है, कॉर्न फ्लोर, और जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं खाने की, जो फूड ग्रेन्स होते हैं मीन्स फूड आइटम्स होते हैं। और दूसरी चीज़ जो मेज होता है, जब वो ग्रो करता है, जो उसका प्लांट होता है जिसमें लीव्स होते हैं, वो एज अ फोडर क्रॉप भी यूज होता है, मीन्स फॉर कैटल्स वी यूज दैट। सो मेज का जो की पॉइंट है, इफ वी टॉक अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ मेज, दैट we use this crop as fodder and food both. Okay, so it is here that used as both food and fodder crops. Okay, now next is pulses. अब pulses varieties there ना, बहुत सारी varieties होती है, even you can see in your kitchen also. And today it is your homework that when you will means after means in the evening after your classes, you will go in your kitchen and you will see the types of pulses, that which type of pulses are there in your kitchen, and you will ask from your mother, and you will see that which one is moong, which one is masoor, which one is arhar. Okay, so let's see pulses. अब pulses में हमारी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram means these varieties are there, or we can say umbrella term, अम्ब्रेला की तरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं ये, ठीक है। तो पल्सीज हैं। अब पल्सीज में क्या है कि बहुत सारी वैरायटीज हो गई यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, मैनी वैरायटीज दे कैन बी ग्रोन इन द सेम सीजन, नो। ओके, अब ये क्या होती है पल्सेस, ये हमारी किस में हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन में, कि जब हम क्रॉप लगाते हैं तो बीच का जो टाइम पीरियड बच जाता है उसमें फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन के लिए इनको पल्सेस को ग्रो करते हैं। ओके, मीन्स दीज आर एज अ सेकेंडरी क्रॉप ऑल्सो, दीज आर यूज एज अ प्राइमरी, मीन्स कुछ फार्मर्स प्राइमरी क्रॉप के मीन्स फॉर्म में इनको ग्रो करते हैं और कुछ एज अ सेकेंडरी क्रॉप। सो इफ वी टॉक अबाउट देयर क्रॉपिंग सीजन, देन इन क्रॉपिंग सीजन वी कैन ऐड बोथ रबी एंड खरीफ। ओके, डिपेंड ऑन क्रॉप मीन्स कि किस टाइप की वो पर्ल्स है, सो इट इज डिपेंड ऑन दैट। See, if we talk about arhar, urad, moong, masoor, these are kharif crop. If we talk about peas and gram, these are rabi crops. Okay, so if we this depend on crops, so that is why means some pulses can be grown in rabi and some pulses can be grown in kharif season. Okay, next thing if we talk about temperature, so temperature 25 degree Celsius to 30 degree Celsius. Okay, means they need this type of temperature. And if we talk about the rainfall, average 45 सेंटीमीटर, और ऐसा हो सकता है कि 40 या फिर 50 तक भी, मीन्स प्लस माइनस हो सकता है 5-5। तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल दे रिक्वायर्ड ओनली दिस। ओके, नाउ द मीन्स कि जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, दे कैन ग्रो देयर ऑल्सो ईजिली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, मीन्स these are varieties of pulses ना, so evenly distributed all over the country, means अलग अलग एरिया में अलग अलग, बिकॉज इनकी जो ये लो टेम्परेचर मीन्स रेनफॉल की नीड कम होती है इनको, तो बहुत सारी मीन्स अलग अलग कंट्री में, हमारी जो कंट्री है उसकी अलग अलग स्टेट्स में ये ग्रो की जाती है। अब जो मेन है, अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इज मध्य प्रदेश। अंडरस्टूड? ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बात करें देन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मीन्स विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन आवर कंट्री, मध्य प्रदेश, एंड द रिमेनिंग राजस्थान, यूपी, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ओके, मीन्स इन दीज स्टेट्स दिस पल्सेस आर बीन ग्रोन। नाउ if we talk about the key point, that what is the key point, then see, in pulses our country is the largest producer of pulses and as well as largest consumer also, means हम सबसे ज़्यादा pulses को grow भी करते हैं, उनका production भी करते हैं and consume भी करते हैं, means हम सबसे ज़्यादा use भी करते हैं, because in our country most of the people are vegetarian। अब ऐसा तो नहीं कि बाहर की कंट्रीज की तरह मांस मीट खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, रेयर। तो वो क्या करते हैं, मीन्स उनके जो सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, विच मीन्स विच क्रॉप विच फूड फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, दिस पल्सेस। सो अब ये पल्सेस जो है इनको क्या बोला जाता है, जो पुअर मैन होते हैं उनका मीट भी बोला जाता है। ओके, सो ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स मीट।
So it is the key point that India is the largest producer as well as consumer of pulses. मीन्स pulses को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी हम ही करते हैं और कंज्यूम भी हम ही करते हैं for the supplement of this protein. Okay, and the next one more important thing about these pulses कि इनको हम लिग्यूनियस क्रॉप्स भी बोलते हैं. इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो मीन्स वो होती है और इससे क्या करते हैं ये सोयल की फर्टिलिटी को गेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो उसमें भी ये हेल्प करते हैं. नाउ इट इज क्लियर बेटा. सो लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल you can learn about these crops, so it will be helpful for you. Now next thing, one more crop is left that is given in your book, millets. In millets 3 crops are given in your NCERT book. See, first jawar, second bajra and third one is ragi. Okay, अब ये जो तीनों की तीनों है, why we include in these millets? बिकॉज ये जो तीनों है जो इनके प्लांट है दिखने में वो एक जैसे लगते हैं. ओके, यू कैन सी ऑल्सो ऑन मीन्स गूगल और यू कैन सी डायरेक्टली इन द फार्म ऑल्सो. ओके, व्हेन यू विल गेट द टाइम. नाउ सी, इफ वी टॉक अबाउट जवार, बाजरा एंड रागी, तो इन तीनों के प्लांट इक्वल होते हैं. मीन्स पतले पतले लंबे लंबे होते हैं और उन पे वो लगे होते हैं जिसमें सीड्स दिखते हैं. सो जवार, बाजरा और रागी इनको हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं बिकॉज जो इनके जो सीड होते हैं खुरदरे और मोटे मोटे होते हैं वो. सो मिलेट्स वी इंक्लूड दीज. और जो ये मिलेट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाई न्यूट्रिशियंस वैल्यू, मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियंस होते हैं. सो मिलेट्स, सो इफ वी टॉक अबाउट द सेपरेटली अबाउट दीज, सो फर्स्ट लेट टॉक अबाउट जवार. सो इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप्स in our country. First one is rice, second one is wheat and third one is jawar. Okay, और दूसरा क्या है, रेन फेड क्रॉप्स. मीन्स इसके लिए बहुत ज़्यादा रेन की नीड होती है और इसको एक दूसरे नेम से भी जाना जाता है, दैट इज sorghum. So it is known as sorghum also. It is rain fed crops. And second thing, if we talk about the state means largest producer, Maharashtra is the largest producer of jawar. So up to here it is clear that jawar, if we talk about jawar, it is third most important crop, rain fed crop है. Okay, and we know it is another name of this sorghum, and Maharashtra is the largest producer of jawar. Okay, now the next crop, that is bajra. अब बाजरा जो है कि ये क्या है, बहुत सारे ड्राई रीजन जो ड्राई एरियाज होते हैं हमारे वहाँ पे भी इजीली ग्रो कर जाता है. सो बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल होती हैं जैसे डेजर्ट एरियाज में, एंड ब्लैक सॉइल. और जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे इजीली ग्रो हो जाता है बाजरा. और इसका जो राजस्थान मीन्स राजस्थान वी नो वेरी वेल डेजर्ट एरिया है, सैंडी सॉइल्स होती है वहाँ पे. तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. ओके, now the next thing, ragi. If we talk about ragi, so ragi crop of dry region. अब इसको क्या बोलते हैं, crop of dry region. बहुत मीन्स बहुत लेस वाटर की नीड होती है, इसको रेनफॉल की नीड होती है. ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल. मीन्स वराइटी ऑफ सॉइल आर देयर ना, कि रेड सॉइल पे, ब्लैक सॉइल पे, सैंडी और लूमी सॉइल पे इजिली ग्रो कर जाती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट, सो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी. So up to here but it is clear. So with the help of this table you will learn these points. Okay, so what we learned today, that the major crops those are grown in our country and their key points. Okay, if we talk about the major crops, then rice, wheat, and third one is pulses we had discussed, maize, and in the last millets. Okay, so you will read from your book today, it is your homework, and you will draw this table, means you can draw